वेलकम बैक और हम बात कर रहे हैं द वेरी ग्लैमरस नादिया हुसैन. Nadia, you've spoken about your parents, your puppo and all these wonderful glamorous, very well put together women. आपके ससुराल में how do they react to the very well put together Nadia and what are they do they मतलब उनका भी कोई असर है आपकी ज़िंदगी पे या नहीं? I mean like you're already Nadia and now that's who you are. They have no influence over you anymore. Like the way I dress or the way who you are or how you be. नहीं ससुराल में I mean they have accepted me as who I am, as what I am, as how I am. और कभी सवाल नहीं उठा कि भाई बेटा कहाँ जा रही हो, नहीं जाना चाहिए अब छोड़ दो. मतलब ये नहीं उस किस्म की नहीं, but like for example my father-in-law will always be like कि क्या तुम बेटा तुम हर अगर तुम for example if there's a fashion show तो वो तो रात को आना होता है देर से, so then he's always like तुम मत आया करो रात को देर से, मुझे बहुत टेंशन होती है. एंड हालात भी ऐसे हो गए, हालात ऐसे हो गए. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट somehow or the other कभी मेरे पास ड्राइवर होता है कभी नहीं होता है, तो फिर I'm driving alone at night, and which of course my husband is always freaking that my father-in-law when the next morning he's like तुम फिर रात को देर से आई हो. तो आपने कभी नहीं सोचा कि मे बी मुझे अपना करियर छोड़ना चाहिए, शायद मुझे सिर्फ फैमिली पे फोकस करना चाहिए? Because I know you are very focused on your family, लेकिन आपको कभी ये नहीं ख्याल आया कि मुझे सिर्फ घर का ख्याल रखना चाहिए, मैं अब काम नहीं करूँगी? नहीं क्यों मैं काम करूँ भाई, मतलब मैं why shouldn't I work? And my husband is supportive enough of that. Initially when I'd gotten married, problems as such नहीं हुई थी, but my husband used to tell me कि अगर if you want to continue in this, you have to manage it yourself. As in like तुम्हें खुद अपना रास्ता खुद ढूंढो. हाँ अपना रास्ता खुद ढूंढो कि तुम अब घर की बहू बन गई हो. मैं अम्मी अब्बा को नहीं I'm not taking them on. तुम इनको संभाल लेना. You do it yourself. What a clever man. तो basically उसने बंदूक kind of left me a little bit like floating in deep waters, and I was just like okay अब मैं क्या करूँ? But luckily I would say, or it was just a natural course of action that happened, that I got pregnant after 3 months and I couldn't work. So वो ऑटोमेटिकली ना वो ज़्यादा मैंने एक वो हेड ऑन उनको नहीं फेस किया, obviously, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एक वो वीनिंग ऑफ हो गई थी. सो विद इन द फर्स्ट 6 months I was not in पहले 3 महीने में तो वैसे ही ज़्यादा काम नहीं किया. 3 महीने के बाद I actually started expecting my baby, and after that it was a huge shock. So I wasn't even doing anything much, and by the time that I actually started showing, I had not done much work. So and after the first baby it was just like do whatever you want, and then I knew that I would have a second one after 1 year, and which is what happened, thank God. Right. That then by that time they were just like okay, let her do what she wants. Yeah, I mean it's like it's irreparable now. Okay, fair enough. Okay, models जो हैं very naturally जितनी models हैं, myself included, मॉडलिंग से एक्टिंग से होस्टिंग some of us went into directing, मतलब हमेशा उसी आर्टिस्टिक फील्ड में रहे. There is no one really जिसने बिजनेस का जो है ना बिजनेस का सोचा हो या अपना बिजनेस. perhaps only one, विनी ने शायद थोड़ा सा इसमें काम किया था, बट मॉडल्स ने भी अपना एक नाम बनाया. they are a brand on their own as well. Why do you think that is so? Is it just that they're not wired that way, or what is it? Because abroad you see मतलब वो अपनी परफ्यूम्स निकालने, अतिका ओडो को देख लें, she started her own cosmetics line, it's working smart, taking your name and turning it into something that works for you. Actually अब जो है ना models have become or celebrities so called. पहले जो है वो इतना ज़्यादा उनके पास celebrity status नहीं था. So अब जब उनके पास celebrity status आ गया है, और वो even for me for example, and you said about yourself as well कि वो natural progression acting में आ जाती है. जब आपको acting में जब आपका नाम बन जाता है, and then you are so busy. Yes. टाइम नहीं मिलता किसी और चीज का सोचने का. टाइम नहीं मिलता किसी और चीज का. Exactly. Until unless you are a little, and I would say even as of right now, our girls are still. There are girls who have been in the industry और वो अब जा चुकी हैं, उनकी शादियां हो चुकी हैं, वो मुल्क से बाहर चली गई हैं, या फिर अभी जो लड़कियां रही हैं जो अभी फॉर एग्जांपल there's Tuba, there's Sunita, there is amongst the girls who have from modeling gone into acting, they're still young, so they still have a lot of time to think of another business venture, to think of what more to do. Right. For example ZQ अभी वो उसने अपनी लॉन निकाली है और अभी आप निकाल ली है. अच्छा, okay. Yeah, so that is something that she has now done.
and after gaining that celebrity status as well. But ab mere liye, for example, if you talk about me, for right now, for me, my focus is definitely the kids. And you know, my boat is pretty much free floating right now. I'm not really sure where, which direction I'm headed in. So did acting come naturally to you? बहुत आराम से आप कर सकें या आपके लिए स्ट्रगल थी आपको मतलब नहीं एक्टिंग मुझे नेचुरली ही आई क्योंकि वो कोइंसिडेंटली जो रोल मुझे मिला वो वही उसी किस्म का रोल मिला जिसमें मुझे ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ओके बिकॉज द डायरेक्टर काइंड ऑफ सॉ दैट आई हैड दैट काइंड ऑफ अ ट्रेट दैट ही वांटेड इन दैट कैरेक्टर व्हिच वाज व्हाट ट्रेट एग्जैक्टली व्हिच वाज एक्चुअली वेरी डेविलिश okay he was just like hey, you have to do this role, you have to do this role. And at that time I was in my second year of college and मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं टाइम निकाल सकती, मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, मेरे ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं नहीं कर सकती. And I kept on brushing, I kept on running away. But he pursued and you know, he made me do it, and I was actually opposite Faisal Rahman, I was opposite Nadia Hussain. Was it intimidating? मतलब ऐसे ऐसे बड़े-बड़े नाम आपके सामने आए एकदम से. Yeah, it was very intimidating, and you know, to actually be in the same room as Nadia Hussain and to be delivering my dialogues, I was just like, oh my God, like what am I doing? I don't even know if I'm doing it right. But I was never really. जैसे कहते हैं ना कि एक डायरेक्टर जो होता है वो बिठा कर आप एक्टर को बताता है कि जी ये है आपका कैरेक्टर, तो जी आप रिहर्सल करें इसकी, तो जी आप ये करें वो करें, वो नहीं हुआ मेरे साथ. आपको डायरेक्शन नहीं मिली बेसिकली. डायरेक्शन नहीं मिली इतनी. हाँ. ओके ठीक है. ऑलराइट. When you, for example, when you come home, and I ask a lot of my guests this, जब आप घर आती हैं आपको कभी कोई पछतावा होता है कि यार अगर मेरे साथ अगर मैं ये रास्ता नहीं चूज करती तो शायद मैं ये कर लेती. And not dentistry, something else. Is there something else which is Nadia Hussain, the undiscovered Nadia Hussain, that we still haven't seen yet? I mean, are you talking about interests or another passion that we don't know about you? Before I'd gotten married, there was, you know, Shahi, the music director, music producer Shahi. He had kind of said that I should start singing. Because even at that time, before I'd gotten married, he had said that you have the right kind of image to be a pop star. And he called me for like, you know, kya hota hai, for like an audition or something. And he did make me sing a song, though I had absolutely no training at that time. But he said, he tried to push me at that time कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम ट्रेनिंग लो अपनी खाला से. And by the way, Nadia Hussain की खाला टीना सानी है, in case you didn't know this. So he said कि another very intimidating name in the world of singing. कि तुम उनके साथ रियाज करो, जब वो रियाज करती हैं तुम उनके साथ रियाज करो और तुम सीखो, and I will help you and I will, you know. क्यों नहीं किया? शादी हो गई भाई. क्या करती मैं, क्या कुछ करती. मतलब शादी करती, गाना गाती, मॉडलिंग करती, क्या करती, बच्चों को भी संभालना होता है. चले ठीक है. On that note, अब वक्त आया कि हम फिर से एक और ब्रेक लें और फिर वक्त आया हमारा AA के राउंड का. But after the break, stay with us. You're watching No Reservations. AA?